if you see the history of past 200 years, not only in India, I am talking about global, all those crises around the country has happened because of money. And बैंक के पास तो पैसा ही पैसा होता है, सबसे ज्यादा पैसा बैंक के पास ही होता है. So all the root cause of all the evil is money. And banks, most of the times, they go overboard and lend to somebody who is not deserving, which cause the entire bank to collapse. That is the reason I don't like financials and banking business. If you look at Goldman Sachs, if you look at Lehman Brothers, all those global biggies came down like anything. The reason for that is high leverage, and you are not able to recover the money. So banking and financials is one of the riskiest business. बहुत लोग बोलते हैं कि ये बैंक 25% से ग्रो कर रहा है. बैंक ग्रो कर रहा है मतलब क्या है? वो लोन दे रहा है. लोन किसको नहीं चाहिए होता है? अगर आप लोन देते बैठेंगे कंटिन्यूअसली at a faster pace, किसको लोन नहीं चाहिए? So loan growth doesn't mean anything. हर किसी को पैसा चाहिए. और अगर लोन ग्रोथ आपका 25% से बढ़ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट अ थिंग टू टेक पॉजिटिवली. आई विल बी कंसर्न्ड अबाउट दैट. द रीजन फॉर दैट इज आपका लोन ग्रोथ इतना फास्ट हो रहा है. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज योर क्रेडिट process, in which credit disbursal process, in which you are going through that process and giving the loan to the deserved candidate. Who knows in the towards catching that growth, what mistakes you have made. And that is what happened with RBL Bank. I used to say in 2015 and 16 times, when the news came that India's fastest growing bank, मैं यही बोल रहा था कि जो बंदा फास्ट दौड़ रहा है, वो दौड़ते वक्त उसको नहीं मालूम होगा कि कहां खरोच आया है. When he will stop, then he will understand कि मुझे खरोच आया है. So growth in banking doesn't mean anything. बैंकिंग में अगर हाई ग्रोथ लोन ग्रोथ है तो यू हैव टू बी कंसर्न. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बिजनेसेस.